Farmers' protest that has been going on for over 15 months now. Now, finally, curtains are coming down on these protests, and Ghar Wapasi, the day for Ghar Wapasi has arrived. From 9 a.m. onwards, Samyukt Kisan Morcha, the umbrella union of various farmers' unions, will conduct a victory march and head back home. As we speak, the farmers are packing the tents and bags at Singhu and Tikri border. At Ghazipur border, Rakesh Sekaret said one lane of the border is going to be opened by tomorrow, and by 16th of December, the entire border would be free. On Thursday, the SKM had announced that the agitation had been suspended following the centre's promise of fulfilling their demands. However, farmers have warned that they will return if centre backtracks from its promise. नवंबर 2020 में दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान आंदोलन की शुरुआत हुई और उसके बाद एक लंबा गतिरोध चला सरकार और किसान के बीच में। ये गतिरोध 3 कृषि कानूनों को लेके था। सरकार और किसानों के बीच 26 नवंबर के बाद बातचीत बंद हो गई और ऐसा लगा कि शायद आंदोलन जल्द खत्म नहीं होने वाला है और पूरा 1 साल बीत गया। लेकिन इस बीच हुआ क्या? इस रास्ते में ये जो जीटी करनाल रोड है, यहाँ पे कई सारे बिजनेसेस थे, 2-3 मॉल्स थे, पेट्रोल पंप्स था। उन लोगों को भी एक कोलेटरल डैमेज बनना पड़ा इस आंदोलन का। हमारे साथ कुछ बिजनेसमैन हैं। अब जब किसान आंदोलन खत्म हो गया है तो उन लोगों की दोबारा से उम्मीद जगी है कि शायद बिजनेस दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन इनसे समझते हैं कि आखिरकार इनका नुकसान क्या हुआ है। सर, आपका नाम क्या है, क्या काम करते हैं? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं यहाँ ओम सर्विस स्टेशन सिंघू बॉर्डर पेट्रोल पंप पे मैनेजर हूँ। और नुकसान की बात करें तो पिछले 1 साल से हमारा काम धंधा बिल्कुल जीरो के बराबर है। ऐसा कह सकते हैं कि उसके अलावा हमारे को लॉसेज इतने हुए कि सैलरी देनी पड़ी सारे बंदों की। बेशक हमने हाफ सैलरी दी है, लेकिन फिर भी दी है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे खर्चे थे जो हमें जेब से देने पड़े, जैसे बिजली के खर्चे हो गए। अब जब गतिरोध खत्म हो गया है तो क्या उम्मीद है कि क्या अब उम्मीद बन रही है कि वापस से बिजनेस ठीक हो? हाँ, उम्मीद तो सब बन रही है। उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। क्या इस दौरान कोई कर्ज भी लेना पड़ा आप लोगों को? कर्ज सर, सैलरी नहीं मिल रही, क्या करें बताओ, क्या करें। बहुत हमारा घर का पता कैसे चला रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो भी नुकसान हुआ है ये गतिरोध की वजह से हुआ, जो सरकार और किसान संगठनों के बीच था, साल भर चला। और उसका कोलेटरल डैमेज सिंघू बॉर्डर के इस पूरे स्ट्रेच पे जो अलग अलग बिजनेसेस थे, उन्होंने भी पिछले 1 साल में बहुत बड़ा कोलेटरल डैमेज। Some news just coming in. This is an update on the Kisan Andolan Ghar Wapasi program. Farmer leaders at the Singhu border will begin marching towards Punjab starting 8:30 a.m. In just a few minutes from now, essentially, at the Tikri border, farm leaders will assemble at the Kisan Chowk in Bahadurgarh at 9 a.m. and begin vacating the protest sites. At the Ghazipur border, farmers will assemble near the main stage at 10 and then begin their Ghar Wapasi. Milan Sharma is getting us more details on that story. She joined us from the national capital. Good morning, Milan. Important day for the farmers' agitation. They are going to start to return today, but they've clearly said that if these demands are not fulfilled, we are going to come back. Well, good morning, Sneha, but it seems like this is the last retreat and they are on their way back home now, because at the border points what has been decided by the Samyukt Kisan Morcha, and they're sticking to their word, because 11th was the date. They announced that they will slowly start moving and dismantling their facilities and all the tents that were put up for their living at the border areas. So whether it's Singhu, Tikri or Ghazipur border, at all border points, in fact at Singhu, the farmers will gather with their tractors and trolleys, something that they came with on the 26th of November to Singhu border, and they will be packing their stuff and moving along, and from there onwards they will move forward. But yes, the demands that have been agreed on, there's a meeting. If we talk about the MSP, that is still going to be a long-standing issue, but some breakthrough has happened. The borders will surely be cleared. It will still take a day or two to clear out Singhu, at least that stretch for kilometers at end. So that is going to take some time, but what we have been told is that the facilities and the tents that were put up, everything will be cleaned out in the next 2 to 3 days more. All right, Milan, thanks for getting us up to speed with that. Milan Sharma with that report, getting us more details about how the protesters will be returning starting at 8:30 a.m. in just
15 minutes from now.